हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 1 mole of each of x1, x2, x3 with van der Waals constant A in atm liter cube mole 2 inverse 1.0, 3.8, 2.1 respectively is kept separately in different vessels of equal volume at identical temperature. Their pressure are observed to P1, P2, P3 respectively. On the basis of this data alone, select the correct option, neglect the effect of B. So in this question we have a x1, x2, 1 mole each with van der Waals constant A, and value of A is x1 1.0, x2 3.8 and x3 2.1. And these are kept in different vessel at equal volume, means तीनों का वॉल्यूम सेम है, at identical temperature means same temperature. So हमें इसका प्रेशर ऑब्जर्व करना है P1, P2 and P3 on the basis of this given data and find out the correct option when B is neglected. So now let's solve this question. According to the given data from the question, x1 is equal to 1.0, x2 is 3.8 and x3 is 2.1. That is the A value. So when gas behaves as a real gas, then van der Waals equation becomes P plus AN square upon V square. V minus B is equal to RT, nRT. Next, according to the equation, B is neglect. Then equation becomes P plus AN square upon V square. V, B क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया. बचा क्या? V is equal to NR. नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? P plus AN square upon V square is equal to nRT upon V. आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती थी हमारी? PV is equal to nRT और यहाँ से हमें क्या मिलता था? P is equal to nRT upon V. So just like that. So here आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? P is equal to AN square upon V square is equal to, so here for ideal gas equation, this equation becomes P plus AN square plus V square is equal to PI. PI for ideal gas. So that means P real is equal to P ideal minus AN square upon V square. So this is our final equation. अब हम कंडीशंस देखते हैं कि अगर इसमें A इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ क्या होगा कि इफ more of value A more subtracted from the value of PI, means A की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो PI में से उतना ही ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा और जितना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा उतना PI की वैल्यू कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी. So that means out of these, which is having the highest A value, it will have the lowest value of pressure.
तो यहाँ हम वैल्यू देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज x2 की a वैल्यू सबसे ज्यादा है, सो क्या होगा यहाँ पे प्रेशर इसका सबसे कम हो जाएगा। तो डेट मीन्स x2 इज लेसर देन x3। देखिए x3 की सेकंड नंबर पे है एंड x1 इसका a वैल्यू सबसे कम है, तो डेट मीन्स प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रेशर का ऑर्डर लिखेंगे। तो हियर P2, P3 and P1. This is our answer. Now let's see the options. So here option C is the correct option for this question. Hope you all understand the solution of this question. Thank you.